Okay, assalamu alaikum everyone. So today we are going over a very important IGCSE past paper, and the paper is, February March 24 paper 2 variant 2, which is an MCQ paper. The total time for the paper is 45 minutes, but we will discuss all the detail of every single question and all four options, why one is correct and why other three are not correct. So since it's a discussion class, it may take few minutes more than the given time. So stay connected, everyone. Let's get started. If you have any question from the previous paper, please ask. No question? Thanks so much. I'm glad that you have no question. So here is the paper. It's February, March 24, recent one, paper 2, variant 2. Let's get started, everyone. The first question is, of course, you know that it is from states of matter. First few questions are going to be from states of matter. Then you would have, according to the syllabus, atomic structure, bonding, moles, electrochemistry, chemical reaction, and so on. So solid X is heated for the 600 seconds. We know it is a solid before this temperature. The moment it touches this horizontal line, it starts melting here. So this should be the melting point. This is the melting point. It is fully melted here, and this become liquid. And at this temperature, it start boiling. At exactly this temperature, this is the boiling point, fully boiled, and it is a gas here, right? So now, the graph shows the heating curve that is obtained. That's the heating curve. What is the melting point of X? Let's look at the melting point. So the one box on the y-axis is nothing but 10 degrees. Since 10 box 100 बना रहे, एक box 10 होगा. So 110, 120, 30, 40, 50, 60, and 70. So what should be the melting point? It must be 170 degrees, correct? And what is the boiling point? 210, 220, 230, 240 degrees is the boiling point. Which statement about diffusion, the random movement of the particle from high concentration to low concentration? Okay. We are looking up for correct statement. Aqueous ions cannot diffuse in water. We know aqueous ions are those ions which are free to move in water, so they can diffuse. The statement says cannot, so they can diffuse. This is an incorrect statement. Diffusion is caused by the random movement. This is correct. I just said diffusion is the random movement of the particles from high concentration to low concentration. Particles spread out in all directions. Yes, it's a random movement. So they go spread out in all possible directions. Correct statement. Diffusion can only take place in solids. Diffusion doesn't happen in solid. It happens in liquid and in gases, but it happens more quickly in gases because the particle in gas, they have supercharged with energy. Which statement about an atom F19 and 9 is correct? It has a 9 neutron. Do you think it has 9 neutron? So something that has 9 and 19, it has 9 protons because the atomic number is 9. There is no charge, exact same number of electrons. The difference of these two values will give you the number of neutrons. So it has 10 neutron. It says 9 neutron. This is an incorrect statement, right? Right, Fatima? Its isotope contain different number of protons. Do you think isotope can ever have different number of protons? Isotope are the particle of the same element with the same protons and electron but different neutrons. It says different protons. Incorrect. It contains more protons than neutron. It contains less protons than neutron. Incorrect. It contains a total of, wait, what? Which statement is correct? It contains total of 28 protons. Let's read all other statements. Isotope contains different number of protons. Incorrect. Its nucleus contains 9 neutrons. Incorrect. It contains more protons. It contains a total of 28 proton, neutron, and I think फिर 8 ही होगी ना. मैं I thought वो सिर्फ 28 protons कह रहा है. इन सबको ऐड करेंगे. मुझे पता है इन सबको ऐड करने से क्या नंबर आ रहा है. It contains 28 proton, neutron, and electron. Okay, I got it. वो initially वो लग ये रहा है कि 28 protons ही कह रहा है. So when you add all these numbers, 10 plus 9, 19 plus 8,
28th. I think A should be the correct answer. Make sense, everyone? Yes. Okay. Two of the isotopes of calcium are represented by calcium 40 and calcium 44. Which statement explains why these isotopes of calcium have identical chemical properties? It is because they have same amount of valence electrons. Okay, both isotopes have a fully occupied electronic shells. Have 4 fully. Initially, they do not have 4 fully. I mean, calcium 20. We know 2, 8, 8, and 2. Do you think the last shell is fully filled? It says 4 fully filled. This is incorrect. It does contain 4 occupied shell of electron, but not all 4 are fully filled. The 4th one is not a complete shell. Both isotopes have a mass number of 20. No, mass number for the first isotope is 40, and for the second one is 44. Incorrect. Both isotopes have, and yes, since they have the same identical chemical properties, it is because they have the same electronic configuration. B is correct. Both isotopes have the same number of neutrons. Isotopes, how can isotope have same number of neutrons? They are the isotope because they have different amount of neutrons. Correct? Which statement describe a property of a potassium iodide? Potassium is group 1, iodine is group 7. It's going to be an ionic compound with formula potassium. They have high melting and boiling point, soluble in water, only conduct when molten and aqueous. So conduct electricity when molten. Correct. Have low melting point. Incorrect. Ionic have giant ionic structures. High melting point. They are volatile. No, something that has high melting point, it is not volatile. Volatile is something that have low boiling point, turn into vapor easily. They are insoluble. No, they are soluble in water. So also incorrect. Number 6. Methanol CH2 has a boiling point of -19, gas at room temperature, because room temperature is 25 degrees. So 25 degree is higher than its boiling point. It must be a gas. At -20, -20 पे of course 19 से नीचे जो भी temperature होगा उस पे वो liquid होगा. It is non-conductor since the covalent, it doesn't have any free electron or ions to conduct electricity. In a sample of methanol, each atom of carbon, hydrogen, and oxygen has a noble gas. So when you have this compound, इसका formula ये है वैसे for those who are looking for. This is the exact structure of methanol. Now in the structure, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है. Just need to know this formula because that is not in our syllabus. But just for the reference, उसने कहा कि methanol में carbon, hydrogen, and oxygen, they all have a stable outer shell electronic configuration, which means their outer shell is full in the bonded form. Each atom has achieved this configuration in one of 3 ways. उसने ये all 3 atoms, hydrogen, oxygen, carbon, they have achieved the configuration either. What do you think? Do they achieve this configuration by the gain of electron, or by the loss of electron, or most important, by the sharing of electron? Since it doesn't conduct electricity, it is non-conductor, it has a very low melting point. So what does we conclude from this? We can conclude that it is going to be a simple molecular, because simple molecular are those substances low melting and boiling point does not conduct, and simple molecular have covalent bond. Covalent में there is no gain or loss, there is only sharing of electron. Correct? Which statement describes the bonding between carbon atom and oxygen atom in methanol? Okay. The carbon atom and oxygen atom share 4 electron. Carbon, देखो 2 हाइड्रोजन है. तो ये मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया है. मुझे बताएं कार्बन के पास टोटल हैं कितने शेयर करने के लिए? कार्बन है 4, तो एक उसने इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया. दिस इज फॉर दिस हाइड्रोजन. अब कार्बन के पास टोटल कितने बचे? कार्बन हैज 2 और ये 2 इस ऑक्सीजन के. सो कार्बन डज नॉट शेयर 4 इलेक्ट्रॉन विद ऑक्सीजन. कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन एटम शेयर 4. आई थिंक दोनों मिला के 4 शेयर कर रहे हैं. इफ यू लुक एट बोथ ऑफ द स्ट्रक्चर, both carbon and oxygen, they share 4. I think this makes sense. Both carbon and oxygen atom share 4. ये ठीक लग रही है. आगे चलते हैं. Carbon atom and oxygen atom share 2. No, मिला के तो वो 4 शेयर कर रहे हैं. Carbon is a negative ion. Incorrect. Carbon is a positive ion. Incorrect. So statement 1 should be correct because both carbon and oxygen together they share 4 electron, 2 from each particle.
The structure of diamond and graphite is shown clearly. This is going to be diamond. How do I know? Because look at one central atom. This is bonded to 4 similar kind of particles. This is nothing but a structure of diamond. And this is graphite, where the structure is layered structure. And layers can literally slide over. Correct? Which statement is correct about the diamond and graphite? Diamond and graphite have low melting point? No, sir. Diamond and graphite. Graphite have layered structure, but not diamond. Incorrect. Diamond and graphite have delocalized. Only graphite have delocalized electron, because in graphite, one carbon forms 3 bonds and the 4th electron is free from every carbon atom. Diamond and graphite contain strong covalent. That is correct, because both are giant covalent, so they do form strong covalent bonds. Which structure, which row contains a description of metallic bonding and a property that is explained by the reference to the metallic bond? So first we need to read the description, and then we'll see whether this is a good reference for that property or not. Let's look at all 4 options. Option number A, a lattice of negative ions. You know, metallic bonding, do you think it contains lattice of negative ions? This is incorrect. Again, the lattice of negative ion, an incorrect description. A lattice of positive ions and sea of delocalized electrons, correct. A metal will react with acid producing hydrogen gas. So, what do you think? A lattice of positive ion, a property explained by reference. Wait a second. So this is a property. This is metallic bond. This is description. And do you think this description have anything to do with this statement? Do the interlink kar rahi hai? This statement is correct. But the point I want to make here is, do the first statement, this statement, have anything to do with the statement on the right side? I don't think so. Acid do react with metals to produce hydrogen gas. But this statement have anything to do with the positive ions of sea of delocalized electron? I'll put a question mark. Let's read option number D. A lattice of positive ion and delocalized electron, a piece of a metal can be molded into different shape. I think this makes sense, because it contains lattice of positive ion, and that lattice the layers can slide over and can be molded because of the movement of the positive ion. So they interlink. I think D should be the correct answer. C must be incorrect. So be careful when you do these such kind of questions. Try number 9 and 10, everyone. As a message karna. Yes, done. अच्छा, सल्फर डाई का तो एमआर तो अब सबको आता है ना. देखो, सल्फर डाई का फॉर्मूला आना चाहिए. सल्फर डाई है तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि व्हाट इज द फॉर्मूला? SO2. अब सल्फर is 32, that's the AR. 1 oxygen is 2, and again 16 is 1 AR, so it should be 64. D must be the correct answer. Make sense, everyone? Yes. Okay. Magnetite is an ore of iron which contain Fe2 plus 3 plus an oxide ion only. What is the formula of magnetite? Okay. So magnetite में Fe2 plus भी है, 3 plus भी है और oxide भी है. यहाँ पे जरा पता चलेगा ना आप सबके नॉलेज का. तो देखो, हमें चार्जेस को बैलेंस करना है. मैं जरा A से स्टार्ट करता हूँ. If this is -2, oxygen is -2. एक आयरन उसने कहा है +2 है और दूसरा आयरन उसने कहा है +3 है. तो ये ओवरऑल +5 हो गया और ये तो ओवरऑल -2 है. ये तो फॉर्मूला इज इनकरेक्ट. One oxygen is -2, 3 of them -6. One iron is +2, other one is -2. आपने चार्जेस बैलेंस करने, करेक्ट. सो वन इज +2, अदर वन इज +3. तो ओवरऑल ये +5 हो गया, वो -6 इनकरेक्ट, बैलेंस नहीं हो रहे. -2, 2 ऑफ देम -4. अच्छा, यहाँ पे अब आपकी मर्जी, आप एक को +2 ले लो, 2 को -2 ले लो, 2 को +2 ले लो, 1 को +3 ले लो.
ये जैसे भी करके आपने -4 करना है, तो ये किसी भी कंडीशन में होएगा ही नहीं. इफ वन इज +2 एंड अदर वन इज +3, तो ये ओवरऑल हो जाएगा +8. या अगर आप इसको 2 को +2 कर लेते हो और 1 को +3, तो ओवरऑल हो जाएगा +7. तो नो वे कि ये -4 के इक्वल, इनकरेक्ट. यहाँ पे बन सकता है चांस -2, 4 ऑफ देम -8. देखो कैसा ट्रिक किया उसने आपको इस क्वेश्चन में स्पेशली, राइट. सो 3 ऑक्सीजन है, आई मीन आयरन है. 1 आयरन, लेट्स अज्यूम 1 आयरन इज +2, अदर 2 आर +3. तो देखो ये +8 हो रहा है या नहीं हो रहा? +8 -8, दैट इज द करेक्ट फॉर्मूला. यस, करेक्ट. Yes, so this was a little different but important question. So make sure कि आप चार्जेस को बैलेंस करके 0 कर दो. पानी भिजवा दे मैम, पानी. Concentrated aqueous sodium chloride, concentrated भी है और सोडियम क्लोराइड भी है, and dilute HCl, both are electrolyzed using inert. ठीक है, देखो यार आपके पास NaCl है, इधर रख दो बेटा, ये ले जाओ, फिर ले जाओ. ट्राई करें सब लोग जरा. नंबर 11 एवरीवन. Ten seconds. All right, Zoomer says it's A. Let's try. So since it is cathode, which row identifies a product of cathode? So it doesn't matter if it is concentrated or aqueous. Cathode पे it should be hydrogen, क्योंकि सोडियम है ना. अगर तो कॉपर होता तो फिर कॉपर जाता. बाकी whatever the salt do you have, doesn't matter concentrated or aqueous, you always get hydrogen. So it should be hydrogen at cathode for sodium chloride. For dilute sulfuric acid, dilute sulfuric acid ना, तो इसमें भी हाइड्रोजन ही जाना चाहिए. Why it's अच्छा कैथोड की पूछा है, तो इट शुड बी बी. जमीर, इट मस्ट नॉट बी ए. ऑक्सीजन तो एनोड पे प्रोड्यूस होती है ना. हाइड्रो ऑक्साइड आयन, आई मीन आर ऑक्सीडाइज्ड, राइट. मेक सेंस एवरीवन? शुड आई एक्सप्लेन? Okay, so NaCl aqueous gives you Na plus ions, Cl negative ion, hydrogen ion, and hydroxide ion. Because it is aqueous, it has all four ions. So हम सिर्फ कैथोड की कोई लिख रहे हैं due to time. तो कैथोड अट्रैक्ट कैटाइन. अब ये इन दो में से मैंने कहा हमेशा हाइड्रोजन जाएगा. You always get hydrogen and it produces hydrogen gas. Whenever you have any salt and it is dilute or concentrated, उन सब में हाइड्रोजन आयंस होंगे और हाइड्रोजन आयन विल रिड्यूस टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एट कैथोड. एक एक्सेप्शन है, इंस्टेड अगर हाइड्रोजन का यहाँ पे हाइड्रोजन का कंपटीशन किससे है? हाइड्रोजन हैज अ कंपटीशन विद सोडियम. हाइड्रोजन का जिससे भी कंपटीशन होगा, इट इज अ हाइड्रोजन दैट इज रिड्यूस्ड ओनली एक्सेप्ट व्हेन देयर इज कॉपर. ठीक है, कॉपर इज एन एक्सेप्शन. सिल्वर एंड गोल्ड, 3 लोग हाइड्रोजन से नीचे रहते हैं प्योर, आई मीन रिएक्टिविटी सीरीज में. कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, इन तीनों की एक्सेप्शन है. सिल्वर और गोल्ड तो कभी आते नहीं है. जो क्वेश्चन में पूछता है वो आपसे कॉपर, तो कॉपर की एक्सेप्शन है, अदरवाइज इट इज ऑलवेज हाइड्रोजन. अच्छा, फिर सल्फ्यूरिक एसिड में, इन सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट, व्हाट आयंस डू यू हैव? यू हैव 2 हाइड्रोजन आयंस, you have sulfate ions, and since it is aqueous you have H plus and OH negative ion. तो अब तो आपके पास कैथोड पे तो हाइड्रोजन ही है ना, जो भी होगा हाइड्रोजन ही जाएगा ना, तो you'll get the same equation. So hydrogen at both equations. Make sense everyone? Correct. Electrolytes can be broken down by electrolysis. Which rows are correct for each electrolyte? Let's see. Dilute aqueous potassium chloride. So dilute है, aqueous है, cathode पे it is correct. अभी मैंने बताया cathode पे always hydrogen. और anode पे if it is dilute, तो cathode पे hydrogen तो होगी ही होगी. And if it is dilute, anode पे you always get oxygen. It's a correct. First one is correct. Concentrated में पंगा होगा. Now you have concentrated, doesn't matter. Cathode की equation remains same. Since it is concentrated,
तो एनोड पे इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन यू विल गेट दैट इन आयनाइन. हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या प्रेजेंट होता है? H प्लस आइन एंड Cl नेगेटिव आइन, राइट. एंड वो क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड है, वाटर भी होगा. तो अब देर इज chloride ion that will be oxidized in preference to hydroxide ion. तो chlorine will be produced. Second is also correct. मोल्टन है, मोल्टन में तो कोई HOH नहीं आएगा. तो मोल्टन में कैथोड है ना, तो कैथोड तो कैटाइन को अट्रैक्ट करता है, तो हाइड्रोक्साइड तो होंगे ही नहीं. ऑक्साइड तो क्यों जाएगा? कैथोड अट्रैक्ट कैटाइंस. कॉन्सेंट्रेटेड हो या डाइल्यूट हो, कैथोड ऑलवेज अट्रैक्ट हाइड्रोजन आइंस, H प्लस आइंस. इसमें तो सोडियम बता दिया इनकरेक्ट. 1 and 2, A must be the correct answer. Which statement about hydrogen oxygen fuel cell is correct? Let's see. Hydrogen extracted from clean dry air. What is the source of hydrogen in hydrogen oxygen fuel cell? One is electrolysis and also by the cracking of hydrocarbon. It is not from clean dry air. में कहाँ से आ गई hydrogen? The only product is carbon dioxide. It's only water. The reaction is endothermic. फिर हम करते क्यों if it is endothermic? We need energy, electrical energy, since redox reaction होता है. Loss and gain of electron are involved. So no toxic gases are produced. A clean source of energy. No toxic gases is produced. Water is the only product of this reaction. Okay. Which statement defines the activation energy of a reaction? It is the minimum energy that colliding particle must have to react. I think this is correct. The activation energy is the minimum amount of energy that the colliding particle must have to react. This is a correct statement. The minimum energy that endothermic reaction, no, whether the reaction is endothermic or exothermic, activation energy is always required. Doesn't matter. It is the maximum energy. No, it is the minimum energy that needed to start a chemical reaction. So there is a must question, and I know that you all are going to, inshallah, score 40 out of 40. Doesn't matter what questions examiner is going to test with. So it's a bit easy question because you are given with the structure, the open structure of every single reactant and product. So now it's easy for us to get. The equation for the complete combustion is shown. What is the enthalpy change? In which enthalpy change we are going to subtract, products from the reactant, enthalpy of the products from the reactant. Let's start with the reactants. So we have two such molecules. It says two. So if let's first get the one. एक में कितने हैं? In one we have HC bond इधर है और एक CH bond इधर है. लेकिन क्योंकि ये two हैं तो हम multiply है तो we will have 4 CH bonds. एक में ये दो हैं, एक ये क्योंकि ये 2 है तो 2 में कितने हो जाएंगे? 4. Make sense everyone? Now there is a CC bond in the middle as well, C triple bond. तो एक में एक है तो दो में 2 हो जाएंगे तो प्लस 2 CC bond. Okay. Now ये तो सीधे सीधे आपको सामने लिखे में 5 oxygen bond. This is what we are going to break. And what are we forming here? Everything is mentioned. तो इधर डायरेक्ट लिखते हैं इनकी एनर्जीज डालते हैं. Please use the calculator everyone. 4 times 415 plus 2 times 837 plus oxygen 5 है, so 5 times 498. Do the maths everyone. Minus. So देखो एक कार्बन डाइऑक्साइड में in 1 CO2, how many bonds between carbon and oxygen? 1 and 2. That is in 1 carbon die. हमारे पास कितने कार्बन डाई? How many carbon dyes do we have? 4. तो एक में अगर 2 हैं तो 4 में कितने होंगे? 8. ठीक है. 4 multiplied by 2 multiplied by CO. तो मैं सीधा इसको लिख देता हूँ 8 CO bonds. और एक वाटर में 2 OH के बॉन्ड्स हैं. कितने बॉन्ड्स हैं? 2. तो 2 वाटर्स में कितने होंगे? 2 वाटर में तो 4 होंगे. So plus 4 OH. Right? This is the products. So 8 CO. 8 CO is 805 plus 4 into OH is 464. Please do the maths, everyone. What's the answer here? Anyone in the class? What is the answer? Yes, please.
कर लेंगे, मैं चलूँ आगे, नहीं बताना आंसर मुझे आपने। लाइबा, रिजवान, चले मैं जा रहा हूँ आगे, क्वेश्चन मैंने बता दिया। ओके, अब आगे तो जाऊंगा ना भाई, तुम लोग अब आंसर नहीं कर रहे हो, इधर से इमोजीज भेज रहे हो मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वहां पे तो खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा ना, वहां पे तो टीचर नहीं कहेगा कि चलें कोई बात नहीं आगे चलते हैं, वहां पे खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। आई एम श्योर इंशाल्लाह आप सही सॉल्व करेंगे, आई नो, इंशाल्लाह। ओके, इन एक्सपेरिमेंट वन, स्मॉल लम्प्स का मतलब छोटे पीसेस of limestone added to ethanoic acid at 40 degrees. The volume of carbon dioxide is made at regular intervals. A graph is shown. Volume of CO2 is okay. Which change would produce the experiment 2? अच्छा, ये जो पहले वाला जो हम कर रहे हैं वो एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंट है ऊपर वाला। अब हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट 2 में चेंज क्या है, यू आर गेटिंग द सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस बट अ लिटिल स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन है ना, देखो इसका ग्रेडियंट कम है लेकिन टोटल सेम है, ठीक है। सो स्लो रिएक्शन है तो हाई टेम्परेचर तो नहीं हो सकता ना, स्लो रिएक्शन पे तो या तो उतना ही टेम्परेचर होना चाहिए और उसके अलावा कोई फैक्टर हम चेंज करेंगे, ज्यादा टेम्परेचर नहीं हो सकता। तो मेरा ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे हम स्मॉल लंप यूज कर रहे हैं, वहां पे हम बड़े पीसेस यूज करेंगे, लेस सरफेस विल बी एक्सपोज्ड, लार्ज लंप विद द सेम टेम्परेचर वुड प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम बट at slower rate. Make sense everyone? It was easy. Haber process. Nitrogen and hydrogen react to make ammonia. Thanks so much. The forward reaction is exo. Enthalpy is negative, right? Which conditions produce the maximum yield? So we want to shift equilibrium to the right. Now, since forward is exo, a low temperature would give a high yield, not a high temperature. क्योंकि temperature high करेंगे, equilibrium backward shift हो जाएगा because forward exo है. Whenever forward reaction is exothermic, a low temperature shift the equilibrium to the right. So we must have to maintain a low temperature. Now, the other factor is pressure. How many moles of gases on the left side? 4. How many moles of gases on the right side? 2. So, a high pressure shift the equilibrium to the side with lesser moles of gas. So pressure must be high, temperature must be low. B should be the right answer. Correct? Yes, sir. Number 18. Ostwald process used to make nitric acid. Thank you. Conditions of process are shown. Catalyst is a transition metal. Pressure is 10 atm. Temperature is 800. Which of these conditions is also used in contact? So in contact, we use vanadium oxide. That's a transition atom. So first one is correct. We use a pressure of 2 to 3 atm. Second is incorrect. We use a temperature 450. इसमें तो कोई भी मैच नहीं कर रही, कोई या कोई कर रही, वन वाली मैच कर रही. It should be A. Oh, sorry, B. Because one only. We use a transition element which is vanadium. यहाँ पे भी transition है. We do not use 10 atm, rather we use 2 atm in contact. We do not use 800, but we use 450. Correct. Okay. Hydrogen iodide is dissolved in water. This is what hydrogen iodide is. When dissolved in water, produce ions. That means it is soluble in water. Okay. And when it dissolves in water, it produces hydrogen ions. That means it should be an acid. I mean, hydrogen iodide is an acid, and since it produces hydrogen ions. Which law describe the final color seen when the solution is tested with damp red litmus paper and with acidified KMnO4? Now, this is something which can give you the acidity or basicity of the substance. कि ये acid है, ये base है. In acid, it turns red, and in base, since वो पहले से red है, तो it will remain red. तो red ही रहेगा ना, क्योंकि वो पहले से red है, acid में dissolve कर रहे हैं. Damp litmus paper, do not blue. ये तो red ही रहेगा. C या D होगा. Okay. यहाँ पे मसला नहीं है. I mean, you need to use your full knowledge understanding of redox reactions. देखो, हम इसमें ऐड कर रहे हैं to the same reaction we are adding KMnO4. अच्छा, आपके पास है, अब आपके पास ये दो चीजें, इसमें you added an oxidizing agent. इसमें KMnO4 is an oxidizing agent, and can you see there is a reducing agent as well? Remember, I told you potassium iodide. It was not potassium, but iodide ions which are reducing agent.
So this is reducing agent, this is oxidizing agent, they would react. So ये इसका कलर पर्पल होता है और ये कलरलेस होता है। तो जब ये रिएक्ट कर जाता है तो इट टर्न्स आयोडीन, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आयोडीन का कलर क्या होता है? ब्राउन, और ये पर्पल से कलरलेस हो जाएगा और वो ब्राउन हो जाएगा। तो ओवरऑल कलरलेस और ब्राउन मिलके क्या सोल्यूशन बनाएंगे? ब्राउन सोल्यूशन। सो सोल्यूशन विल टर्न ब्राउन and it both entries for C is correct. Make sense, everyone? A very good question. A good question. So that's your knowledge and understanding. Not going to be easy, but I know inshallah agar aap थोड़े effort डालेंगे, you put every question, आप उसकी explanation साथ लिखोगे, और I have no doubt कि inshallah you are going to score 40 marks here with complete understanding, not with tokaism. Okay. The statement about the aqueous ethanoic acid. Aqueous ethanoic acid is an organic acid which is weak acid, right? So partially ionized. ये आपने याद रखना है. It can be produced by oxidizing ethanol with potassium. इसकी देखो, हम इसको ethanol से oxidize करके ethanoic acid बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम कौन सा oxidizing agent use करते हैं ना? ये तो reducing agent है. We need KMnO4 to convert ethanol into ethanoic acid, not iodide. This is a reducing agent. It reacts with magnesium to form West. Whenever any acid, doesn't matter if it is ethanoic acid or whenever you have any acid react with group 1 or group 2 metal, it produces salt and hydrogen gas. So it produces hydrogen gas. Second is correct. That means it cannot be A and B. It should be C or D. Its approximate value is pH 3. It's a weak acid. So we know weak acid of pH 3 or above. Approximate है तो मैं इसको अभी तक correct मान लेता हूँ. It produces esters called methanoate. तो देखो ये ethanoic acid है, तो जो esters बनेंगे वो ethanoate होंगे ना, वो methanoate तो नहीं हो सकते. So 2 and 3, C must be correct answer. So which element form an acidic oxide? Non-metals form acidic oxide. Calcium is metal, lithium is metal, magnesium is metal, sulfur is non-metal. Its oxide would be acidic. Make sense, everyone? Yes. Okay. Which statement describe the properties of HCl, a strong acid? इसमें काफी सारे acids से question about it. Yes. So we got to be very careful with all the chapters, especially bonding, acids, organic. So hydrochloric acid, carbon dioxide is produced when limestone. What is limestone? You know what is limestone? HCl hai, limestone is calcium carbonate. So we are reacting a carbonate with an acid. You will definitely get carbon dioxide gas. Is correct. Hydrogen is produced when sodium hydroxide. मेरी बात सुनो, जब किसी भी alkali को sodium hydroxide is an alkali reacts with acid, you get salt and water, not hydrogen. Incorrect. Methyl orange turns yellow in strong acid. मुझे बताएं कि methyl orange yellow किस में होता है? वो तो bases में होता है, acids में तो red होता है. Red litmus paper turns blue. No, red litmus remain red when dissolved in acid, dipped in acid. 23. Elements P and Q have the same number of electronic shells. That means they are present in the same period. Same number of electronic shells refers to the same period because only the element in the same period have the same number of occupied shells. An atom Q has more electron in the outer shell than P. If Q has more electron, Q has a higher group number. High group number. उसका group उस P से ज़्यादा है. Correct? Okay. Which statement is correct? P and Q are in the same group. No. क्योंकि एक के number of electrons ज़्यादा है, तो how can they be in the same group? They are in the same period. Yes, because they have same number of occupied shells. They are in the same period. P has a greater tendency to form positive ions. ये debatable बात है, देख लेते हैं. देखो, इसका ग्रुप नंबर हाई है. Q has a higher number of electron, तो इसका हाई ग्रुप नंबर है. अगर इसका हाई है तो P का ग्रुप नंबर कम है. Let's assume कि P ग्रुप 2 में और Q ग्रुप 4 में, क्योंकि उसका हाई ग्रुप नंबर है तो वो बड़े ग्रुप में होगी.
तो मुझे बताएं विच हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी, P वाला ज्यादा मेटल है या Q वाला? विच इज मोर मेटालिक? More metallic are those which are present on the left of the periodic table. So P is more metallic, and it has a greater tendency to form positive because metal lose electron and they become positive ions called cations. So 3 is also correct. The oxide of Q is more basic. No, since P is more metallic, so metal oxide of P is more basic, not Q. क्योंकि Q के number of electrons ज्यादा हैं, वो ज्यादा non-metallic है. Number of electrons in the valence shell, it is more non-metallic. It is more acidic and less basic. 2 and 3, C must be the correct answer. Which substance react with dilute sulfuric acid to form a salt that can be removed from the resulting mixture by filtration? अच्छा, हमने सल्फ्यूरिक एसिड का किसी ऐसी चीज से रिएक्शन करना है कि सॉल्ट बने. अब सॉल्ट जो बनेगा उसमें सल्फेट आयंस होगा ना, क्योंकि ये तो कभी जो सॉल्ट होता है उसमें एसिड का एनाइन होता है, तो दिस इज एनाइन. तो हमें पता है कि कौन से एनाइन सल्फेट, व्हिच व्हाट आर द सल्फेट्स व्हिच आर इनसॉल्युबल. पहले तो पूछ रहा है व्हिच सब्सटेंस. अच्छा, बेरियम क्लोराइड है. मेरा ख्याल यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि बेरियम क्लोराइड को इसमें डालेंगे तो इट वुड फॉर्म बेरियम सल्फेट. बेरियम क्लोराइड, इमेजिन बेरियम क्लोराइड आपने ऐड कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड. अब जैसे आप ऐड करोगे बेरियम आयन विल डू दोस विद सल्फेट आयन. वी नो दैट 3 सल्फेट्स आर इनसॉल्युबल, LCB. ये आपने सॉल्युबिलिटी टेस्ट याद करना है. लेड सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट. सो लेड एक्वस बेरियम इज करेक्ट. सोडियम सल्फेट बनेगा भी तो वो सॉल्युबल होगा. कॉपर रिएक्ट ही नहीं करेगा, लेस रिएक्टिव. एंड कॉपर सल्फेट इज इनसॉल्युबल, आई मीन सॉल्युबल, तो इट वुड नॉट फॉर्म precipitate. How do I know it precipitate? क्योंकि कह रहा है कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन से किस चीज को निकालते हैं? समथिंग दैट इज इनसॉल्युबल. इसका मतलब वी हैव टू रिएक्ट सल्फ्यूरिक एसिड विद समथिंग व्हिच कुड रिजल्ट टू फॉर्म अ सॉल्ट that is insoluble, and only insoluble salt can be removed through filtration. A must be the correct answer. Right? समझ आ रही है ना भाई साहब? Okay, astatine is below iodine in group 7 of the periodic table. Which row describe the properties of astatine? Astatine देखो, fluorine diatomic होते हैं ना, bromine. First two are gases. Bromine is brown liquid, iodine is gray black solid. तो उसके जो नीचे होगा वो भी तो solid ही होगा ना, क्योंकि नीचे आते हुए density बढ़ रही है. ऊपर वाली gas, liquid, solid, ये तो ज्यादा black solid होगा. It is not a gas. It should be a solid. Reactivity. देखो ये तो सबसे कम reactive है. We know that top to bottom reactivity decreases. Displaces iodine. It cannot displace iodine because it is less reactive. Does not displace any of these. D should be the correct answer because it is least reactive in all of the group, because it is the last member of the series. Which property explain why copper is transition? Transition की पहले properties लिख लेते हैं. Colored compounds act as catalysts. Variable oxidation state. What does it mean? It means the same element can form different charges. Low density is not a property of transition. Good conductor is a property of transition, but it is not only of transition. वो तो ग्रुप 1 और 2 वाले भी गुड मेटल्स, गुड कंडक्टर होते हैं, तो इससे हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये ट्रांजिशन है या नहीं. आई थिंक बी इज करेक्ट बिकॉज सेम एलिमेंट कैन फॉर्म डिफरेंट चार्जेस. तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं. कॉपर कैन बी बेंट इनटू डिफरेंट शेप कर सकते हैं, लेकिन वो तो किसी और को भी कर सकते हैं, इससे ये तो नहीं पता चला कि ट्रांजिशन है या नहीं. करेक्ट? यस. ओके. Brass is an alloy of zinc and copper, we know. अच्छा, लिख दिया copper and zinc. Which statements are correct? Brass, copper and zinc all conduct electricity. I think brass तो इन दोनों का mixture of metal है, alloy. तो ये I mean करेंगे ना, because metals है, तो metal conduct करती है. Brass is a compound. We know alloy is not a compound. Alloy is a mixture. Brass is an alloy. Brass is harder. Yes. जो एलॉय बनता है वो उसी के मेटल से ज्यादा हार्ड होता है, बिकॉज नो यू हैव डिफरेंट साइज्ड एटम्स व्हिच कैन नॉट स्लाइड ओवर. सो 1 and 3, C must be the correct answer. Equation for the reaction of metal and dilute sulfuric acid zinc sulfate is shown. So that shows metal M
is since metal M displaces zinc, and displace का मतलब होता है कि reduces zinc. zinc यहाँ पे +2 है, यहाँ पे ये सल्फेट -2 और यहाँ पे zinc 0 हो गया. तो देखो zinc को उसने reduce कर दिया 2 पर. तो metal M is more reactive. Something that displaces is more reactive. Explain why M reacts with zinc sulfate. Zinc is less reactive than M. ये बात ठीक लग रही है. Zinc is less reactive. It is being displaced because M is able to accept electron. मुझे बताएं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किसने किए. M का चार्ज यहाँ 0 है और M का चार्ज यहाँ +2 है क्योंकि सल्फेट का -2 है. तो जरा देख के बताएं कि M ने 0 से +2 में गई, क्या इसने एक्सेप्ट किए हैं या इसने लूज किए हैं? इसने तो लूज किए हैं. M just lost 2 electron, but except तो zinc 2+ ने किए. Incorrect. Zinc is more powerful reducing agent. Zinc तो खुद reduce हुआ है. +2 से 0 is reduction. तो जो खुद reduce होता है वो oxidizing agent होता है, not a reducing agent. तो वो reducing agent कह रहा है. Incorrect. Zinc is more reactive than M. Zinc is not more reactive. Zinc ions can move electron from M. Yes. तो देखो इसकी आयनिक इक्वेशन ये है M जिंक आयंस. जिंक पहले 2+ थे, सल्फेट तो चेंज नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे M+2 हो गया और जिंक हैज बीन रिड्यूस्ड टू जिंक. तो जिंक आयंस दे रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम M. तो और खुद जिंक आयंस क्या बन गए? जिंक मेटल बन गया और M इज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू M2+. सो जिंक आयंस they removed electrons. So zinc are better reducing agent, oxidizing agent, and as they reduces themselves. Okay, makes sense everyone? Okay, in a blast furnace, the impurity silicon dioxide, silicon 4 oxide, removed by the formation of slag. Okay, अच्छा, इसके reactions तो आप सबको आते हैं ना, होता क्या है? लिख दूं यहाँ पे. So सबसे पहले मैं कार्बन इज, कल भी बताया था, कार्बन इज, these are the reaction that takes place in the blast furnace. In the second step, carbon dioxide react further with oxygen to produce carbon mono. In the third step, carbon mono react with iron 3 oxide to give you iron which is still impure, contain acidic impurities and carbon dioxide. Now we've added a limestone. Limestone is thermally decomposed to give you lime and carbon dioxide. This lime produced can react with silica, which is acidic impurity attached with iron. Physically attaches के formula के साथ नहीं नजर आ रही, to form molten slag. Which equation represent the formation of the substance which reacts with silicon? तो कहाँ पे हो रही है? To form slag. Formation of. I think it should be C. Which equation represent the formation of the substance which react with silicon? तो मुझे बताएं सिलिकॉन के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है? सिलिकॉन के साथ तो रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड. तो किस इक्वेशन में वो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है? इस इक्वेशन में, और तो कहीं नहीं बन रहा. तो which equation represent the formation of that substance which react with silica? C में ही बन रहा है. Aluminum extracted from bauxite by electrolysis. Which statement is correct? So which statement is correct? Okay. Aluminum ions are oxidized to form aluminum. देखो aluminum जब भी कोई चीज ion, whenever any ion अपने मेटल की फॉर्म में जाता है तो वो ऑक्सीडाइज हुआ, रिड्यूस हुआ. यहाँ पे तो +3, यहाँ पे 0 है, तो डिक्रीज इन चार्ज हुआ ना, तो रिड्यूस हुआ, नॉट ऑक्सीडाइज. कैथोड हैज टू बी रिप्लेस. इट इज नॉट कैथोड, एनोड. याद रख लें भाई, ये स्कैम नहीं करना आपने वहां पे जाके अपने साथ ही. एनोड को रिप्लेस करते हैं, कैथोड को नहीं करते. कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड एट एनोड, ये बात ठीक है. कार्बन डाई इज प्रोड्यूस्ड, कैसे प्रोड्यूस होती है? देखो जो ऑक्साइड आयंस हैं, दे oxidized at anode producing oxygen gas, right? That oxygen gas ये produce कहाँ पे हो रहे हैं? एनोड पे. एनोड किस चीज का बना हुआ है? कार्बन का. मैंने आपको बताया था, इमेजिन योर गाड़ी का silencer is made up of wooden material. तो what would happen? That silencer will be burn off. तो ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो कहाँ रही है? कार्बन पे. एक ऐसी चीज पे हो रही है that is combustible. It should burn to get CO2. Cryolite is added to decrease the melting point. Iron rust because aluminum does not easily corrodes. अच्छा, आयरन रस्ट हो रही है लेकिन एल्यूमिनियम, क्योंकि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूट, लेस रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, लेकिन वो देयर इज नो लेयर ऑन द टॉप. एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर आती है जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है, वो नॉन पोरस होती है.
Which statement explains why aluminum does not corrode? It is not an alloy, it's a metal. It is below iron, it is more reactive than iron. It is a transition, it's a group 3 metal. Its surface is protected by an oxide layer. That is correct. Surface is non-porous and that has an oxide layer on the top. Which chemical can be used as fertilizer? Fertilizer may we need NPK. Nitrogen, phosphorus, and potassium. Right? Okay. So which fertilizer do you think have all three? Nitrogen तो है, potassium भी है, phosphorus नहीं. Nitrogen, potassium, oh sorry, phosphorus and potassium इसमें तीनों है. Nitrogen, phosphorus, potassium नहीं है. Potassium है, nitrogen है, phosphorus नहीं है. So देखो NPK is what we need: nitrogen, phosphorus, and potassium. So this can be used as it's a good fertilizer which provide all three elements required for the healthy growth of the plants. अभी मैं आता हूँ, पानी लेके आओ. अभी आता हूँ नीचे 5 minutes. आता हूँ बेटा, अभी नीचे से ले लो जाके. Okay. What is the color change when water is added to cobalt anhydrous? देखो cobalt पहले से blue है, इसमें water add करेंगे तो turn pink. तो बहुत ही आसान है. Blue to pink should be the correct answer. Make sense everyone? White to blue होता है copper 2 sulfate. ये तो कोई कलर ही नहीं है बाकी वाले. क्योंकि कोबाल्ट की बात हो रही तो blue to pink. How do carbon dioxide and methane can cause global warming? So global warming कैसे cause करते हैं? They emit thermal energy they've absorbed back to earth. बिल्कुल ठीक है. They are greenhouse gases. They absorb energy and then they emit energy to the earth. ठीक है. अर्थ से absorb करते हैं, अर्थ को release करते हैं. They absorb radiation. I mean, अगर global warming cause करें तो they should release rather than absorb. They increase thermal energy loss to the space. No, they decrease the thermal energy loss to the space because they absorb the radiations. They reduce reflection thermal energy from the sun. They increase, that make no sense. 4 statements about photosynthesis are listed. 4 statements. Chlorophyll is required, yes, for the green color. Photosynthesis equation. In photosynthesis, you see, do we use oxygen in photosynthesis? Photosynthesis के तो ये reactants हैं, ये reverse equation लिखी है. This is the correct equation. Reverse लिख दो. Both are incorrect. Oh, sorry. Second is incorrect. Photosynthesis require energy from light. Yes. UV light लेती है ना, so this is correct. Photosynthesis releases carbon dioxide. No, it absorbs carbon dioxide. Releases oxygen and glucose. So 1 and 3, A should be the correct option. Makes sense, everyone? We are close, about to finish, inshallah. I'm sure you all are connected with me and listening with patience, solving with me, since it is you people who are going to appear. And I know, inshallah, you're going to score 40 out of 40 in this coming paper, right? Okay. So which molecules are structural isomers? 4 and 5 carbons. I mean, इसमें तो double bond है, ये तो हो नहीं सकता इसका. क्या हुआ? मिमी? किसने? दिया तुम्हें अभी कुछ तो. Okay, so देखो, इसमें structure 1 में we have 5 carbons and 12 hydrogens. If you get all the carbons and hydrogens, structure 3 में देखोगे ना, structure 3 में 1, 2, 3, 4, 5. Same 5 carbon and 12 hydrogen. They are structural isomers. How do I know? Formula, molecular formula same है, structure different. देखो, इसमें 4 carbon are in the main chain, 5th is in the branch. यहाँ पे 3 carbon in the main chain, there are 2 branches. So ये तो total different है. 1 and 3 are isomers. इसमें total 4 carbons हैं, I mean 5. 4 are in the main chain and 5th is branch. इसमें तो total number of carbon ही extra है. 5 main chain में इसमें total carbon 6 है, इसमें total carbon 5 है, तो ये they are not isomers. 1 and 3 are isomers. A, B should be the correct answer.
Which statement about the reaction of ethene with steam? It is an addition reaction, right? The product has higher molecular mass. Product का exact वही होगा जो reactant था. Incorrect. Okay, product have higher than ethane. Which statement? हाँ, ethane देखो, ethene है C2H4, इसका हम steam से reaction कर रहे हैं H2O से, तो addition reaction होगा, you will get the single product C2H5OH बनेगा. ठीक है, तो OH इसका MR डेफिनेटली ज्यादा है किससे? सी इथेन से C2H6. क्यों? इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक अकेला ही 16 होता है. प्रोडक्ट हैव हायर MR, प्रोडक्ट हैव हायर MR, ये करेक्ट बात. ठीक है. प्रोडक्ट रिएक्ट्स विद एक्वस ब्रोमीन. अब इसका प्रोडक्ट ये है, डू यू थिंक इट शुड रिएक्ट? इट डज नॉट रिएक्ट विद एक्वस ब्रोमीन. ब्रोमीन के साथ सिर्फ डबल बॉन्ड वाले रिएक्ट करते हैं. दिस प्रोडक्ट डू नॉट हैव एनी डबल बॉन्ड. इनकरेक्ट. बात में नहीं करना. ओके. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन कार्बन एटम डिक्रीजेस. मुझे बताएं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन कार्बन एटम्स. ओहो, वाओ. तो ये बात ठीक लग रही है, बिटवीन कार्बन. देखो, इथीन रिएक्ट विद स्टीम. इथीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, फिर स्टीम का ड्रॉ करेंगे. तो ये इथीन का स्ट्रक्चर है. अब मुझे बताएं, जस्ट फोकस इन बिटवीन कार्बन एटम. मीन है ना, तो डबल बॉन्ड है. यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हुए इन टू कार्बन एटम्स? कितने शेयर हुए में? 2 बॉन्ड्स हैं. एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन. जब आपने इसमें स्टीम ऐड की तो डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में चला गया. इसके पास H आया, इसके पास OH आ गया, बाकी के पास 2 हाइड्रोजन पहले से. अब मुझे बताएं, बिटवीन कार्बन एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए में? 2, क्योंकि एक बॉन्ड है. तो पहले 4 थे, अब 2. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कार्बन एटम डिक्रीजेस. ये बात ठीक है. 1 and 3 वाला ऑप्शन ठीक है. रिएक्शन प्रोड्यूसेस अल्कोहल, तो बनाता है हाइड्रोजन भी बनाता है. नो, 1 and 3 B must be correct. फातिमा, सिर्फ 5 मिनट्स दे दो ना, सिर्फ 5 मिनट्स में भेज देते. ठीक है. मीथेन रिएक्ट्स एंड क्लोरीन रिएक्ट्स टू फॉर्म क्लोरोइथेन. तो ये एन है ना, एन हैलोजन से रिएक्ट कर रहा है, तो कौन सा रिएक्शन है? इट इज अ सब्स्टिट्यूशन. इट डजंट रिक्वायर निकल, इट रिक्वायर यूवी लाइट. इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ए मस्ट बी करेक्ट. Parts of structure of 2 different polymer X and Y are shown. We know it's an amide linkage and the sequence is carbon, carbon, nitrogen, nitrogen. तो ये nylon है. This is what? Nylon. इसमें भी amide linkage है, but sequence is carbon, nitrogen, carbon, nitrogen. तो ये protein है. Both have same linkage. So different, different. A और C तो वैसे निकल गया. Same linkage है. मोनोमर्स दोनों के डिफरेंट है, क्योंकि एक में हम यूज करते हैं अमीनो एसिड्स. प्रोटीन में यूज अमीनो एसिड एज मोनोमर्स, डिफरेंट अमीनो एसिड्स. हियर वी यूज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस डाइमीन, राइट? सो मोनोमर्स आर डिफरेंट बट लिंकेज इज सेम. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट, chromatograph. Substance Q is tested with paper chromatograph, right? This is the baseline drawn with the pencil. These are the two, different to separate one. Which statement is correct? क्या हुआ भैया, क्यों छेड़ रहे हो उसको? Okay. First statement, Q is pure. Do you think Q is pure? Pure का तो एक स्पॉट आता है, यहाँ पे मल्टीपल स्पॉट्स आते हैं. जो प्योर चीज होती है उसका 1 स्पॉट आता है. RF values of the lower spot is 0.25. देखो 0.25 RF वैल्यू होती है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सोल्यूट ओवर सॉल्वेंट. हमने इसको 1 इज्यूम कर लेते हैं, पूरे को 1 इज्यूम कर लेते हैं. तो मुझे बताएं कि अगर हम लोअर वाले को मेजर करें, अगर ये टोटल 1 डिस्टेंस है, तो ये वाला कितना होना चाहिए? ये हाफ से तो ज्यादा ही होना चाहिए ना. चलो मैं 0.75 मान लेता हूँ, राइट? तो इट शुड बी 0.75 ओवर 1. तो इसकी RF वैल्यू 0.75 या 7 या 0.5 से तो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हाफ से ज्यादा डिस्टेंस उसने किया हुआ है. Q is a mixture of at least 2 different. ये बात ठीक है, क्योंकि इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, तो 2 different substances. Q is a compound of 2 elements. No, ये मिक्सर है जिसका सेपरेट हुआ है 2 different.